Hello students. In this video lecture, we are going to deal with the solution of the recurrence relation or differential equation. Okay. So I'm going to write here recurrence relations and difference equation. Both are the same thing. Okay. Both are the same thing. Differential equation. And in the last class, we have studied about the degrees, orders, types, okay, of the recurrence relation and difference equations. And we have studied the types of method to solve out to find out the solution of these recurrence relations or difference equations. So we have studied in the last class the first method, that is iterative method, iteration method. Okay. Today we will study in this video lecture. We will study method of characteristics root. Method of characteristics roots. Method of characteristic roots. Okay. By this method, we will try to find out the solution of the recurrence relation of the or difference equations. So, how we will work? First of all, we will try to find out the solution of linear, homogeneous, recurrence relations. Recurrence relation, or you can say difference equation. Okay. So, equation of the form n plus c1 a n minus 1 plus c2 a n minus 2 plus dot plus ck a n minus k equals to 0 be the homogeneous recurrence relation with constant coefficients. Be the homogeneous recurrence relation with constant coefficients. Okay. Now, for an equals to Rn in the now to find out the solution, how we will find out the solution? Okay, put an equals to Rn in the above recurrence relation. We get Rn plus C1 R to the power n minus 1 plus C2 R to the power n minus 2 and plus dot plus Ck R to the power n minus k equals to 0. Now dividing by n minus k r to the power n minus k, if we divide it by the r to the power n minus k, then we will get r1, okay, r to the power k plus c1 r to the power k minus 1 and then plus c2 r to the power k minus 2 and plus dot plus up to ck equals to 0, which is called a characteristic equation of the recurrence relation, and each solution or called the characteristics roots. Okay. And each solutions are called the characteristic roots. Actually, it is a characteristic equations of the recurrence relation which is given above. Okay, which is given above. So the roots or the solution of these recurrence relations are called the solutions of the recurrence relations.
So there may be some cases to find out the roots of the characteristic equations. The roots may be same, may be identical, may be distinct, or maybe some identical or some distinct, or maybe all the distinct, or maybe. So there are the cases. Okay. So case first. In the case first, if all the roots are real and distinct, if all the roots if all the roots are real and distinct, if all the roots are real and distinct, then the general solution is, how we will write the general solution then? Then the general solution is an equals to b1 r1 to the power n plus b2 r2 to the power n and plus dot 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 plus bk rk to the power n. Okay, bk rk to the power n. Here b1 b2 up to bk are the constants, are the constants which are to be determined, which are to be determined by initial condition. Okay, by the initial condition. So क्वाइट सिंपल. ये जो आपके पास, अगर आपके पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो आपका सॉल्यूशन जो है ना, फर्स्ट रूट टू द पावर एन, सेकंड रूट टू द पावर एन, एंड बी वन प्लस इंटू फर्स्ट रूट टू द पावर एन प्लस बी टू इंटू सेकेंड रूट टू द पावर एन प्लस बी थ्री इंटू सेकेंड रूट टू द पावर एन, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा. ओके, और बी वन बी टू बी के सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे जो इनिशियल कंडीशन से वी कैन फाइंड आउट. ओके, नाउ केस सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास? व्हाट अबाउट द केस सेकंड? If there are multiple roots, if there are multiple roots, okay, say r1 equals to r2 equals to r3, okay, and r4, okay, these are distinct. For example, this the three roots are the equal, okay, repeated roots are there. Then the general solution written in the form as an equals to b1 plus b2n plus b3n square, b3n square, and r1 to the power n, and then plus b4 r4 to the power n. All the roots are written like bk r2 rk rk to the power n. Okay, here r1 is the triple root. Case third, if the roots are imaginary, roots may be imaginary. Okay, if the roots are imaginary, that is r1 plus minus iota r2, then the general solution will be written in the form n equals to b1 r1 plus iota r2 to the power n
n plus b2 r1 minus, okay, r1 minus iota r2 to the power n, if the roots are like this in the form of the complex number. Okay, and the case fourth may be here. If the pair of imaginary roots are repeated twice, it may be the case. If the pair of imaginary roots, that is r1 plus minus iota r2 are are repeated twice, then the general solution is in the form an equals to b1 plus b2n r1 plus iota r2 to the power n plus b2 b3 plus b4 n, then r1 minus iota r2 to the power n. Okay, if the roots are repeated, then b1 plus b2n r1 plus iota r2 to the power n, and b3 plus b4 into n, and r1 minus iota r2 to the power n. If the imaginary roots are repeated twice, okay. Check. Now these may be the cases, and now we will try to find out the solution of the differential equations or recurrence relation. For example, solve the differential equation solve the differential equation AR equals to, so in the differential equation AR minus 3 AR minus 1, and then plus 2 times AR minus 2 equals to 0. So how we will find out the solutions? Okay, the solution is very simple. The given recurrence relation or difference equation is the given recurrence relation is AR minus 3 times AR minus 1 plus 2 times AR minus 2 equals to 0. Okay. Put AR equals to alpha, put AR equals to alpha to the power R to find out the solution. Okay. To find out the solution. As we have worked in the beginning of this lecture, then we try to put the value of R to the power n in the given recurrence relation. Okay. So alpha to the power R, then minus 3. It's very simple. Okay, it's just a simple calculation. Alpha to the power r minus 1, then plus 2 times alpha to the power r minus 2 equals to 0. Okay, then divide it by alpha to the power r minus 2. Now put, okay, it's a bit confusing here. Actually ar equals to alpha to the power r in the above equation, then we do this. Okay, so divide this equation by alpha to the power r minus 2, then we will get alpha to the power 2 minus 3 alpha,
and then plus 2 equals to 0. If we divide it by this number, okay, if we divide alpha to the power r minus 2, the complete I'm doing, if you face the some problem here, so हमें कैसे डिवाइड करना है इसको, अल्फा टू द पावर आर और अल्फा टू द पावर आर माइनस 2 minus 3 alpha to the power r minus 1 upon alpha to the power r minus 2 and then plus 2 अपॉन ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. तो गाइस पहले तो मैं बता दूं, जो गिवन रेकरेंस रिलेशन है आपका, ये लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 1 है, सॉरी ऑर्डर तो इसका, हाँ ऑर्डर इसका r, ऑर्डर इसका हो जाएगा 2 ऑर्डर है, डिग्री 1 है, फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और होमोजीनियस है, ओके, इक्वल्स टू 0 है. तो इससे डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2. अब इसका सोल्यूशन निकाल लिए, क्वाड्रेटिक आपके पास बनेगी, और इसका सोल्यूशन बनेगा अल्फा स्क्वायर बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट 2 + 1 अल्फा देन प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा माइनस का अल्फा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0. अल्फा को मान लो तो अल्फा माइनस 2, देन माइनस 1 को मान लो तो अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ अल्फा माइनस 2 पूरा कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. Here we will get the two values, alpha equals to 2 and alpha equals to 1. Both are the distinct roots. And the solution of the above recurrence relation will be AR, okay, B1 or R1 to the power n, है ना, n plus B2, okay, R we have not alpha 1 to the power r plus b2 alpha 2 to the power r. Okay, so b1 is the constant and alpha 1, what about the alpha 1, it's the 2 or 1, you can consider any one of these, that is 1 to the power r plus b2 is the constant alpha 2, that is 2 to the power r, which is equals to b1 plus b2 to the power r. Okay, it's the required solution of the given differential equation or the recurrence relation. So it's a very simple thing. Okay, another question we are going to deal here. Next question: solve the difference equation. Solve the difference equation क्या डिफरेंस इक्वेशन है भाई हमारे पास, ए आर माइनस 4 टाइम ए आर माइनस 1 देन प्लस 4 टाइम्स ए आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड ए 0 ए नॉट इक्वल्स टू 5/2 और ए 1 इक्वल्स टू 8. यह हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, यानी कि हमें इनका यहाँ पे कांस्टेंट जो हमारे पास b1 b2 है, तो अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें दो इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी, दोनों से आप कांस्टेंट रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल करके. नाउ सॉल्यूशन, द गिवन recurrence relation or difference equation is AR minus 4 time AR minus 1 plus 4 time AR minus 2 equals to 0, which is of first degree, second order linear homogeneous difference equation. Okay, इतनी चीजें हम इसके बारे में बताएंगे. होमोजीनियस दैट इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में है, ठीक है, और डिग्री 1 है, तो ये लीनियर हो गया. ओके, और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ऑर्डर है इसका कितना, 2, दैट इज द हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या हो जाएगा आपके लिए 2. तो सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इतना सब हम बता देंगे इसके बारे में. ओके,
Now we try to find out the solution for this. Here we will put AR equals to alpha to the power R, alpha to the power R. हम इसमें alpha to the power R रखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, put AR equals to alpha to the power R in equation 1. ठीक है, in equation 1. तो alpha to the power R minus 4 alpha to the power R minus 1 plus 4 alpha to the power R minus 2 equals to 0. Now, then we divide the above equation by alpha to the power R to the alpha to the power R minus 2. तो जब हम इसे alpha to the power R minus 2 से divide करेंगे, then we will get, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, divide the above equation by alpha to the power R minus 2. Okay, alpha to the power R minus 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा देन प्लस का 4 equals to what, 0. So it's, what about this, it is alpha minus 2 का whole square. It means that here we have two solutions, that is alpha 1 2 and alpha 2 is also 2. So these two are the repeated roots. क्या है आपके पास, repeated root है आपके पास, है ना, repeated roots है. तो in case if we have the repeated roots, then we have the solution as AR equals to B1 plus B2R, है ना, B1 plus B2R and 2 to the power R, which is the required solution. But here we have the initial conditions too, that is A naught. A naught is also given and A1 is also given. So the two conditions are given here, like A naught. So A naught equals to A naught की यहाँ भी रख देते हैं इसमें, that is B1 plus B2 R की वैल्यू 0 रख दी और 2 to the power 0, है ना, that is equals to B1. और यहाँ पे A नोट रख दिया आपने, देन हम यहाँ पे रखेंगे A1. A1 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 8. ठीक है, A1 इक्वल्स टू 8. तो B1 प्लस B2 2 to the power 1 इक्वल्स टू क्या, 8. ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला था हमें, B1 प्लस B2 टू द पावर 0. ये B1 है, B1 हमारे पास क्या था, A नोट हमारे पास क्या गिवन है, A नोट हमें दिया हुआ है ऊपर सवाल में 5/2. ठीक है, और A1 दिया हुआ है हमें 8. तो यहाँ से एक तरीके से B1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. B1 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 5/2. सो B1 प्लस B2 2 टाइम्स है ना, बाहर 2 भी हो गया यहाँ पे, equals to 8. If we substitute the value of B in this equation, then we will get 2 times 5/2 then plus B2 equals to 8. Then we will get 5 plus 2B2 equals to 8. And this implies that 2B2 equals to 3 and B2 equals to 3/2. Now the required solution is, oh, now the required solution is AR equals to B1 क्या हो गया आपके पास, 5/2 प्लस B2 क्या हो गया, 3/2, and then what about R? R is as it is, then 2 to the power R, which is the required solution. Okay, which is the required solution of the given differential equations. Okay, similarly we will solve the another one problem here for the practice purpose. Next question is, solve
fn equals to fn minus 1 plus fn minus 2, n is greater than equals to 2, with the initial condition, that is f0 equals to 1 and f1 equals to 1. Okay, now solution. The given difference equation is fn equals to fn minus 1. बस एक छोटा सा चेंज है कि इस बार जो डिफरेंस इक्वेशन है आपका वो पहले की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ए एन की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ए आर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। वही एफ एन इक्वल्स टू ए आर पुट करें आप, इसमें आर टू द पावर एन पुट करें, है ना, तो इट विल लुक लाइक आर टू द पावर एन equals to r to the power n minus 1 plus r to the power n minus 2 equals to, okay, and then rewrite it like this: r to the power n minus r to the power n minus 2 minus r to the power n minus 1 equals to 0. Now divide it by the r to the power n minus 2. Then इसको कैसे डिवाइड करेंगे, r टू द पावर n माइनस 2, द लोवेस्ट डिग्री पावर टर्म से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो r टू द पावर r स्क्वायर minus r minus 1 equals to 0. So here we will get the two solution of I think it's the solutions are r equals to 1 plus minus square root 3 by 2. So there are two solutions. Okay, and the two solution r1 equals to हो गया आपके पास 1 plus square root 3 by 2 and r2 equals to क्या हो गया 1 minus square root 3 by 2. एक्चुअली ये जो सोल्यूशन आया ना, ये शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कहाँ से है, श्रीधराचार्य से निकाला हमने। अगर आपके पास कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 है। Just substitute all these value in this formula, then we will get this. Okay. So then the homogeneous solution is, हमारे पास जो इसका homogeneous solution मिलेगा, fn equals to b1, the first root 1 plus square root 3. I think there should be 5. Okay, there should be 5. Maybe the miswritten. Square root 5. So 1 plus square root 5 by 2 to the power n and plus b2 1 minus square root 5 divided by 2 to the power n. Here given that f0 equals to 1, then this implies that if we put the value of n to the n0 here, then we will get b1 plus b2 equals to 1. Okay, if you put here 0 in place of n, we will put here 0, we will put here 0, we will put here 0. So on putting 0, this value will be 1 and this value will be 1. So we will get here b1 plus b2 or f0 that is 1. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन। दूसरी कंडीशंस जो हमें दिया हुआ है इसमें कि f1 इक्वल्स टू 1, f1 इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया b1 1 plus square root 5 by 2 की पावर 1, then plus b2 1 minus square root 5 divided by 2 to the power 1. b1 क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या मिला हमें कि b1 और 1 plus square root 5 b2 1 minus square root 5 equals to 2. तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे क्या ओके equals to 2. So by this we will get b1 on simplification this equals to 1. If we simplified it,
what we will get, b1 plus b2 and plus square root 5 b1 minus b2, okay, equals to 2. So what about the b1 plus b2? b1 plus b2 is equals to 1, okay. Then b1 minus b2 equals to 2 upon square root 5. b1 minus b2 equals to this 1 upon 2 upon square root 5. Okay, I think it should be equals to 1. No? There is a 1 value. Okay, there is a mistake. Okay, so b1 minus b2 equals to this, and b1 plus b2 equals to 1. So on solving this equation number 2 and first, on solving the equation number 2 and first, we will get b1 equals to 1 upon square root 5 and 1 plus square root 5 divided by 2, and b2 equals to minus 1 upon square root 5, 1 minus square root 5 divided by 2. So substitute the value of b1 and b2 in the final solution, we will get the required answer. And our required answer will be fn equals to 1 upon square root 5, that is the value of b1, that is 1 plus square root 5 by 2 to the power n plus 1, okay, and minus 1 upon square root 5, that is 1 minus square root 5 by 2 to the whole power n plus 1, okay. Now next question we deal with this here. Another question is, solve the differential equation, solve the differential equation n plus n minus 1 plus n minus 2 equals to 0. Substitute, okay, solution. The given differential equation is n plus n minus 1 plus n minus 2 equals to 0. Divide the complete equation by n minus 2, or first of all we put here n equals to r to the power n, okay, n equals to alpha to the power n भी कर सकते हैं और r to the power n भी कर सकते हैं. Then we get r to the power n plus r to the power n minus 1 plus r to the power n minus 2 equals to 0. Okay, divide करते हैं r to the power n minus 2 से, then it will be r square plus r and plus 1 equals to 0. On solving, we will get here r equals to, okay, सो एबीसी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई यहाँ पे, ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई 1. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की, ओके, इक्वल्स टू 0. अगर इसका सोल्यूशन निकालना है आपको, इसके रूट्स निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ac निकाल सकते हैं. ऊपर हम डिस्कस 2a हम ऊपर डिस्कस करके आए. तो ए की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, और बी की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी. तो माइनस का बी, दैट इज माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू 1. ओके, तो वैसे क्योंकि आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, ब्रेक हो गया होगा, तो इस वजह से आप ये छोटे छोटे फॉर्मूला अभी याद नहीं होंगे, लेकिन ये इसको सीधाचार्य भी बोलते हैं. तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे दो आपके पास सोल्यूशन मिलेंगे. एक R1 मिलेगा क्या, माइनस 1 प्लस 3 आयोटा बाई 2, एंड दूसरा R2 मिलेगा आपके पास माइनस 1 माइनस 3 आयोटा बाई 2. ये आपके पास दो सोल्यूशन इसके मिल गए. तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं,
है ना। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो उसका होगा वो होगा ए एन इक्वल्स टू बी वन, और आर वन क्या है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट, ओके वी मिस्ड स्क्वायर रूट हियर, स्क्वायर रूट 3, ओके स्क्वायर रूट 3, so -1 plus square root 3 iota divided by 2 to the power n, and then plus b2 -1 minus square root 3 iota divided by 2 to the power n, which is the required solution of the given homogeneous linear difference equation with constant coefficients. So it's a very simple, guys. Okay, it's very simple. So in the continuation, we will discuss the another example, and we will discussing here the different categories of the example, so that you can understood the you could understood the concept very easily. Okay, solve the following difference equation: AR minus 6 times AR minus 1 plus 12 times AR minus 2 minus 8 AR minus 3 equals to 0. तो जो आपके पास में हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन है, गिवन डिफरेंस इक्वेशन ये होगी, हमें क्या करना है इसमें, वही ए आर टू द पावर एल्फा टू द पावर आर रख लेना इसमें, है ना। देखो समटाइम्स डोंट बी कंफ्यूज हियर कि कहीं पे ए आर, कहीं पे एफ एन, कहीं पे कुछ, है ना। तो ऑल दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट, ओके, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट हियर. So AR equals to alpha to the power R, we put here, then we get the equation alpha to the power R minus 6 alpha to the power R minus 1 plus 12 alpha to the power R minus 2 minus 8 alpha to the power R minus 1 R minus 3, R minus 3 equals to 0. So dividing the complete equation by alpha to the power R minus 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास alpha to the power 3, although we will divide the alpha to the power r minus 3, okay, because the lowest power is alpha to the power r minus 3, okay. So we will get alpha to the power 3 minus 6 alpha square plus 12 alpha and minus ka 8 equals to 0. So it's a cubic cubic equation, okay. So there will be the three solution of this equation: alpha 1, alpha 2, alpha 3. So if we see the in a proper manner, so it's nothing but the alpha minus 2 to the power 3 whole square. In the next class, I will tell you that how we will find the roots of any cubic or biquadratic or quadratic polynomials, okay, or equations. So don't worry about it. So here we have the three repeated roots, 2, 2, and 2. So here we have the general solution as A r equals to B1 plus B2 n plus B3 n square and 2 to the power r, okay, which is the required solution. So guys, the questions are very easy. So you guys don't worry about the questions. In the next class, we will continue this method with other interesting questions with some special cases. Okay. So guys, see you in the next video lecture. Thank you very much. Keep learning, keep growing, and see you next time. Thank you very much.